Let us start. This is the first session of Quant for XAT. Whatever theory is required, I'll say I will not go into the absolute fundamentals, but if some new concept is required, I'll cover with the example. So here, you have 2 minutes. Try. Comment answers. So this habit you need to develop for Quant as well. Read from the first word till the last option before you start moving your pen. Maintain speed. Suppose Haruka has a special key in her calculator called delta key. Delta key. Rule 1, if the display shows a 1-digit number, pressing delta key replaces the number by twice its value. अगर single digit है तो your number becomes 2a. If display shows a 2-digit number, pressing delta key replaces the number with the sum of 2 digits. अगर आपके सामने number आ गया AB, you press it will become A plus B. ये सब understanding है. Suppose Haruka enters value, that is enters value 1 and then presses delta key repeatedly. After pressing the key 68 times, what will be the displayed number? So some operation must be performed 68 times. There has to be a pattern. And we are going to find that pattern. It is not possible कि आप एग्जाम में actual 68 times करोगे. There must be a pattern in it. तो the number was 1. अब देखो pressing यहाँ से शुरू हुआ. Value becomes 2, 4, 8, 16. अभी देखो 16 बन गया है. Listen to this. अभी one time press हुआ. ये key strokes है 1, 2, 3, 4. ये entry किया. पहला key stroke double, 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 then 4. अब जब key stroke होगा, it is supposed to become 7. When it is 6th keystroke, it will become 14. When it is 7th keystroke, it will become 5. 8th keystroke, it will become 10. 9th keystroke, it will become 1. क्योंकि 9 के बाद ये 1 आ गया. This is upper value is the keystroke. This is the output. This is the output. Now when you press the 10th keystroke, ये 1 का फिर से 2 बन जाएगा. तो ये कहाँ repeat हुआ? ये 2 कहाँ repeat हुआ? 10 में. It is called a cycle of 9. इसमें और इसमें जो गैप होता है साइकिल 1 से लेके 10 में रिपीट करा 9 का साइकिल है. आप जब 11 लिखोगे ये वाला रिपीट करेगा. आप जब 12 लिखोगे तो ये वाला रिपीट करेगा. आप जब 13 लिखोगे तो ये वाला रिपीट करेगा. ऐसा. दिस इज साइकिल ऑफ 9. 9 का बंच है. कैन आई राइट 68 as 63 plus 5 which is 9 into 7 plus 5.
तो 9 के 7 साइकिल हो गए, 7 साइकिल, हमारी पांचवी वैल्यू आएगी, फिफ्थ वैल्यू. व्हाट इज फिफ्थ वैल्यू? 7. दैट इज योर आंसर. फिफ्थ वैल्यू इज 7. ये Z का क्वेश्चन है. So it's a pattern based question. What is called a cycle? जो इसमें और इसमें गैप होता है रिपीटिंग वैल्यू में, 10th 1 फर्स्ट एंड 10th में जो गैप है, that is 9. 9 is the cycle. So what you need to do is you need to convert the 16 into cycle of 9. The largest cycle I have seen in CAT and XAT for any kind of question is up to 12. अब वो रिमाइंडर्स में भी हो सकती है or some other question. This is basic application of numbers with cyclicity. Let me know if there's a doubt. Always read from the first line till the last option, then start solving. ये जो मैं लिखना शुरू कर दिया यहाँ पे, that was to help you visualize. ये एग्जाम में ये सब नहीं करना आपने. Single digit है, you must double. If it is a 2-digit number, you must add 2 digits. Try. Comment your answers. Five students appeared for an examination. The average marks obtained by these 5 students is 40. The maximum mark for the examination is 100. Each of the 5 students scored more than 10 marks. However, none of them scored exactly 40 marks. Based on the information given, which of the following must be true? Conditions क्या क्या है? सबका एवरेज 40 है, किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 40 नहीं है, मिनिमम मार्क्स 11 है. Everybody scored more than 10 marks. More than 10 means minimum 11. And maximum marks 100 है. तो ये 4 conditions को हमको follow करना है. There are 5 people. Now the question is, which of the following is absolutely true? इनमें से कौन सी बात 100% सच है? Which of the following is absolutely true? Must be true. कम से कम 3 लोगों का स्कोर मैक्सिमम 40 है. मतलब कह रहे 3 लोगों का स्कोर आपको
40 से कम चाहिए, कम से कम 3 लोगों का स्कोर 40 से कम चाहिए। तो इज इट पॉसिबल फॉर मी कि मैं 4 लोगों का स्कोर 40 से कम कर दूं? देखो, see when you assume the average as 40 or given average is 40, you can imagine every number equal to 40. That is the meaning of average. अब मैं क्या करूं, देखो मैं इन सबका स्कोर 39 39 39 39 करके यहां से 1 1 1 1 यहां देख के 44 कर देता हूं। सो कह रहा है कम से कम 3 लोगों का स्कोर तो 40 तक था, मैंने 4 लोगों का कर दिया, मैंने 2 लोगों का 39 कर दिया, बाकी इनका लेट अस से 38 कर दिया, इनका 41 41 42 कर दिया, तो 2 का भी हो गया। तो क्यों 3 का जरूरी है? नॉट नॉट नेसेसरी। एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर्ड मोर देन 40। नहीं, मैंने तो सिर्फ एक का मोर देन 40 किया है, ये बाहर हो गया। एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर्ड एग्जैक्टली 41 मार्क्स। देखो यहां किसी के 41 मार्क्स है क्या? नॉट नेसेसरी। एट मोस्ट 2 ऑफ देम स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स। मैंने यहाँ पे 3 लोगों का मोर देन 40 कर दिया। देखो देखो, one thing is clear, when you imagine 4 people have average 40, you can imagine they are all equal. You can imagine that. Now you are telling me nobody scored 40. अगर मुझे इसको 40 नहीं करना है, अगर मैं इसको कम करूंगा, किसी और का बढ़ाना पड़ेगा। मुझे इसको 40 नहीं करना है, मुझे इसे कम करना है, मुझे किसी और का बढ़ाना पड़ेगा। सो आई कैन से फॉर श्योर कम से कम एक ऐसा बंदा है जिसका 40 से कम होगा। मान लो केवल यही बंदा है, लेट अस से मैंने इन सबको कर दिया 41 41 41 41, इसको भी 30 करना पड़ेगा ना। तो कम से कम एक बंदा, क्योंकि इसका स्कोर कम होगा तो किसी और का बढ़ेगा। देयर इज मिनिमम 1 पर्सन हु इज बिलो 40। यू कुड आल्सो से देयर इज मिनिमम 1 पर्सन हु इज अबव 40। minimum 1 person below 40, minimum 1 person above 40. Which of these statements is true? E. Now this is that question. इसमें बच्चा कंफ्यूज क्यों होगा? वो मैक्सिमा मिनिमा लगाएगा कैट वाला। कैट वाला मैक्सिमा मिनिमा इज यूजुअली बेस्ड ऑन AMGM। अब क्योंकि यहाँ पे अरिथमेटिक मीन 40 गिवन है तो वो उसमें फंस जाएगा बच्चा, वो नहीं करना। थोड़ा अलग ढंग से अप्रोच करना आपको Z को। मैनुअली आपने 2-3 केसेस बना दी, यू कैन सी एक ही नंबर अबव 40 है तो 2 अबव 40 क्यों होगा? कैंसल्ड। यहाँ पर 4 बिलो 40 है, 2 बिलो 40 है, तो क्यों 3 बिलो 40 होगा? कैंसिल। मैनुअली चेक करके आपका आंसर आ जाएगा E। कॉमन सेंस है। एवरेज मीन्स यू कैन इमेजिन एवरीथिंग इक्वल टू 40। मैंने सारे नंबरों को 40 के बराबर ले लिया और बाद में चेक कर लिया। ट्राई। A painter draws 64 equal squares of 1 square inch on a square canvas measuring 64 square inches. She chose 2 squares, 1 square inch each, randomly, and then paints them. What is the probability that 2 of the painted squares have a common side? 2 of the painted squares have a common side. तो पहले तो आपके पास 64 स्क्वायर्स हैं 1 इंच एरिया के, और जो कैनवस है वो खुद 64 स्क्वायर इंच का स्क्वायर कैनवस है।
64 स्क्वायर इंच बनेगा 8 by 8. दिस इज 8 inches by 8 inches. अब उसमें एक एक स्क्वायर इंच के मुझे स्क्वायर्स बनाने हैं, तो बेसिकली इट इज अ चेस बोर्ड. एग्जाम में सब ड्रॉ नहीं करना आपको इतना. आई एम ऑल्सो नॉट काउंटिंग. लेट मी काउंट. 1 2 3 4 5 6. लेट अस से ये 7. लेट अस से ये 8. इसके बाहर कुछ नहीं है. यू डोंट हैव टू ड्रॉ इन द एग्जाम. ऑब्जर्व. ये आपका चेस बोर्ड है. फ्रॉम हियर टू हियर एंड हियर टू हियर. अभी इनको क्या करना है, इनको दो दो स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं रैंडमली. प्रोबेबिलिटी में व्हाट डू वी हैव इन द डिनोमिनेटर? ऑल पॉसिबिलिटीज. तो यू विल हैव 64 C2. ये रहेगा आपके पास. 64 into 63 upon 2 into 1. कैंसिल कैंसिल. 32 into 63. ये रहेगा डिनोमिनेटर में आपके पास. न्यूमिनेटर में क्या रहेगा? नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर. क्योंकि आपको साइड बाय साइड चाहिए, तो साइड बाय साइड के दो तरीके होते हैं, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो आप ध्यान देना, आई एम गोइंग टू मैन्युअली काउंट दिस. आपको केवल एक लाइन लगेगी हॉरिजॉन्टल. देखो, आई कुड हैव काउंटेड दिस एज वन फेवरेबल केस. ये दोनों एडजेसेंट है. 1 2 3 4 5 6 and 7. तो एक लाइन में देर आर 7 केसेस विच आर फेवरेबल. ऐसी हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन है? 8 लाइंस है. ये हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल भी सेम केस होगा, तो इनटू 2. तो आपका टोटल आंसर होगा 7 into 8 into 2 upon 32 into 63. तो लॉजिकली इफ यू सी, ये 8 से कैंसिल 4 टाइम्स, ये कैंसिल 9 टाइम्स, ये कैंसिल 2 टाइम्स. सो आंसर शुड बी 1 by 18. 1 by 18. ये 1 by 18 तो नहीं है. देखो, ये 500 का अगर 20 टाइम्स भी होता तो 10,000 होता. ये बहुत आगे है उससे. नॉट पॉसिबल. ये 1 by 18 तो है नहीं. तो आंसर इज आइदर दिस और द आंसर इज दिस. अगर ये 1 by 18 होता तो 7 into 18 के आखिरी में 6 आता है, नॉट 8. वैसे भी 7 into 18 कुछ 130 के आसपास होता है, 120 के आसपास होता है. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो ओनली आंसर पॉसिबल इज ए. यूज अ कैलकुलेटर और चेक कर लो ये 1 by 8 है क्या. इनफैक्ट कैंसिल मत करो. 7 into 8 56, 56 into 2 112. योर आंसर इज ए. व्हेन समथिंग मस्ट बी एडजेसेंट, एक बार मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ. हाउ कैन यू काउंट एडजेसेंट? जैसे मैंने इनको काउंट कर लिया, ये एडजेसेंट है. 1 फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ. तो 7 हॉरिजॉन्टल मेरे पास फेवरेबल केस है एक लाइन में. ऐसी मेरे पास 8 लाइंस है, 8 रोज है, 8 रो. और वर्टिकल कॉलम भी 8 है. तो एक बार डबल कर दिया. डबल क्यों कर दिया? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. So the numerator is 782, denominator is 32 into 63. Your answer is A. Common sense, answer should be 1 by 18. But ऐसा option है नहीं. The only one that fulfills these requirements is A. Moving on. Try.
The addition of seven distinct positive integers is 1740. What is the largest possible greatest common divisor of these seven distinct positive integers? आप ये कह रहे हो when you add seven positive numbers, the addition is 1740. Your job is to find out HCF of these numbers. Now, one thing you need to understand, if I say there's a number 28, if I say there's a number 24, if I say there's a number 32, their HCF is 4. Every one of these values is a multiple of 4. You need to learn this. If there is a HCF of given numbers, the numbers are multiples of HCF. So whatever is the HCF here, the numbers are multiples of it. So the addition is also multiple. Let us say इनका HCF x है. These numbers are all multiples of x. और अंदर में कुछ अलग अलग छोटे छोटे values आ जाएंगे. Now one thing I am comfortable with is, देखो 7 numbers अलग अलग बनाना टाइम लगेगा. Let me think reverse and break this down. ये 20 का मल्टीपल है. 20 into 8 is 160, बच गया 140, which is 7 times. Confirm these calculations. 20 into 87. Now what is 87? ये 15 बनता है. That is 20 into 3 into 29. This is the breakdown value I have. आप कह रहे हो इनका HCF 42 होगा. 42 खुद 7 से बनता है, 7 into 6 से. जब इनके एडिशन में ही 7 नहीं है, there is no 7, HCF में 7 कैसे होगा? What is the value? 74. 74 is 37 into 2. तो इनके मल्टीपल में 37 दिखना चाहिए, is not there. 140 is a multiple of 7. 7 तो है ही नहीं, क्यों सरका रहे हो? हटाओ उसको. So answer is either B Bombay or answer is none of the above. तो मैंने क्या किया? मैंने यहां से अगर 60 को अलग कर दिया as a HCF, तो इन नंबरों का एडिशन 29 बनना चाहिए and numbers must be distinct. 7 numbers हैं, 29 बनना चाहिए. Let me try this. Smallest numbers मैंने लेना शुरू किया. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. कितने नंबर हो गए? यहां से लेके यहां तक the addition is how much? Addition is 21. आखिरी वाले को मैंने 8 बना दिया. Who cares? लास्ट वाले को मैंने 8 ले लिया. 29 एडिशन भी बन गया. आंसर इज B Bombay. As a concept you need to understand, HCF जो है उसी का मल्टीपल नंबर होता है. The word factor means ये जो नंबर है 28 इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4. 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. अगर HCF 4 है तो ये नंबर इंडिविजुअली सारे 4 के मल्टीपल्स है. अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं होता तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं थी. आपका आंसर 60 आ चुका है. एक बार 60 आ गया उसके बाद आपने चेक क्यों किया? आई एम ट्राइंग टू हैव डिस्टिंक्ट वैल्यूज, और ये बहुत ज्यादा एडिशन है, वेरी स्मॉल नंबर. मैंने 1 2 3 4 करके शुरू किया. मैं यहाँ आके रुका. मैंने देखा एडिशन अभी तक कितना हुआ है. एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज 6 into 7 by 2. याद है आपको नेचुरल नंबर का सम n into n plus 1 by 2. तो ये 21 तक का एडिशन है. मुझे और कितने नंबर चाहिए? 8 नंबर चाहिए. लगा दो. Try.
All right. So there is some club called Guava. They have won 40% of their matches in the Apple Cup that they have played so far. If they play another N matches and win all of them, their winning percentage improves to 40, 50. Further, further, if they play 15 more matches and win all of them, their winning percentage improves from 50 to 60. How many matches has Guava Club played in Apple Cup so far? There's a small problem in framing. Do I count matches played before N or do I count matches played before 15? It says further if they play because the condition is if and if twice. My job is to find these matches where their winning is 40%. So in this case, 90% people will apply the concept of averages. Assume the number of matches is X, 40% of them are winning. Now all the matches are winning. Total matches are X plus N. The winning percentage is 50. So by solving this cross multiply, rearrange, you'll probably come to a conclusion X is equal to 5N. So if X is equal to 5N, total matches now are 6N. Out of these 6N matches, 50% winning is there. Now you are going to play 15 matches further, which is 100% winning. Total matches are 6N plus 15 and now the percentage is 0.6. By rearranging you can find out N and from there you can find out X. So if I rearrange this multiplied is 3.6, this is 3, so that is 0.6 N. This is 9, that is 6. So N is equal to 10. All right. So N is equal to 10, X is equal to 50. Job done. So maybe 3 or 4 steps of writing get the job done. As I said, 90% people will go for this. It's a fairly linear thinking. Think reverse. The winning average was 50, it became 60. Winning average was 50, it became 60 when you combined 100% winning. The gap between these two is 40. The gap between these two is 10. So 4:1. If the number of matches are 15 here, the number of matches must be 60 here. 60 matches have been played. Before these 15, 60 matches have been played. Earlier, the winning percentage was 40. You put into it 100% winning and you achieve 50% winning. The gap is 50 and the gap is 10. That is 5:1. This 5:1 is 60 matches. This must be 50, this must be 10. So in the beginning, there have been 50 matches played. This is the concept of alligation. A lot of time people confuse when to apply alligation, when to apply averages. Alligations are applied when you know the two combining things and the final outcome. When you know both, the initial values combine and final value, you can apply alligation. Alligations are used to find mixing numbers. These are mixing numbers. Question could be solved through common concept of averages or concept of alligations. Is the second method clear to you guys? Try. Take 2 minutes, give it a shot. No answers? ABC is a triangle with BC being 5.
D is the foot of perpendicular from A on BC. E is the point on CD such that BE is equal to 3. AB square minus AE square plus 6CD is how much? As soon as I see squares, as soon as I notice squares, my first observation or first thought is Pythagoras theorem. But here, this usually Pythagoras theorem is addition of squares. There's a difference of squares here. Something different is going on. In all of this, we only have one length. BC is equal to 5. AD is a perpendicular. Then there is a point E such that B is equal to 3. So I'm imagining E is on the right side. This is BE, that is equal to 3. So this must be 2. So what I want is AB square minus AE square plus 6CD. So I need to work with this. This line looks like a hypotenuse in the right side, and this line looks like hypotenuse on the left side. So I'm writing this down. AB square is equal to, I have no idea what is this length. The total length here is 3. So if I imagine this to be x, this becomes 3 minus x. So this is equal to AD square plus x square. If I talk about AE square, A is a hypotenuse, which is AD square plus 3 minus x square. Now I need a difference of the two. So I'm subtracting both. Once I subtract, this gets cancelled. I have x square minus 3 minus x square, which turns into 6x minus 9 is equal to AB square minus AE square. Somehow, by using this value, I need to either find the value of x to put it here. I need to cancel the value of x. What is the value here? CD. CD. What is CD? This is whole 3. This is whole 3. So what is CD? CD is equal to addition of this and addition of this. Or rather CD is equal to 5 minus x. So I'm adding 6 times of CD, which is 6 times of 5 minus x. I'm adding this. This becomes 6x minus 9 plus 30 minus 6x. 6x cancelled. Minus 9 plus 30, 21. That's your answer. So guys, you see squares, you see perpendiculars, Pythagoras theorem. Try.
Separately, Jack and Srishti invested some amount of money in a stock market. Jack invested the amount, kept reducing 50% every month. Srishti invested the amount, which also reduced every month, but in an arithmetic progression for every with a common difference of 15,000. They both withdrew their respective amounts at the end of 6 months. They observed if they had withdrawn their respective amounts at the end of fourth month, the ratio of their amounts would have been same as the ratio after sixth month. The amount of money invested by Jack in the stock market is how much? So here there is one GP, one person is getting 50% return, or the money is becoming 50% at the end of every month, and the other person is losing 15,000 every month, like an arithmetic progression, and this is geometric progression. So मेरे को 6 नंबर चाहिए. आई एम गोइंग टू डिवाइड समथिंग बाय 6. तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, आई एम फोकसिंग ऑन द मंथ एंड. आई एम इमेजिनिंग द मनी इज 32 रुपीज. पहला महीना खत्म हो गया. दिस इज मंथ 1 एंड. मंथ 2 एंड 16 रुपीज. मंथ 3 एंड 8 रुपीज. मंथ 1, 2, 3. मंथ 4 एंड 4 रुपीज. मंथ 5 एंड 2 रुपीज. मंथ 6 एंड 1 रुपी. ये पहला पर्सन है जैक. अब क्योंकि मंथ का एंड है ये, इफ आई इमेजिन शुरू का पैसा वाज x रुपीज, आई कैन इमेजिन इट 60 एज 64. और अदर ये नहीं करना आपको. इफ आई, क्योंकि पैसा दोनों का सेम है, आई एम टेकिंग द मनी एज x, तो पहले महीने के एंड में जाएगा x माइनस 15,000, x माइनस 30,000, x माइनस 45,000. जितने महीने उतना माइनस हो जाएगा. x माइनस 60,000, x माइनस 75,000, x माइनस 90,000. ये कह रहे हो आप फोर्थ महीने के एंड में जो इनका पैसा है विल बी इन द सेम प्रोपोर्शन है सिक्स्थ महीने के एंड में. तो 4 अपॉन x माइनस 60,000 है, k लगा हुआ है, इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 90. ये सॉल्व करने की आप बात कर रहे हो. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. 4x माइनस 540, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. x माइनस 60 रीअरेंज कर लिया. 3x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा. लेट अस होप वी आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स हियर. 1 2 3, ये फोर्थ मंथ का एंड है, ये सिक्स्थ मंथ का एंड है. अरे बाबा, 4 इंटू 90 360. तो रीअरेंज कर लिया. 3x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 100. 100,000 है बेटा पैसा. 100,000, 100,000 ए, 100,000. अब आपके मन में आ रहा होगा, सर आपने दो अलग अलग नंबर क्यों अज्यूम किए हैं जब दोनों के पैसे बराबर है. देखो, क्योंकि पैसा यहाँ डिवाइड होने वाला है एंड द रेशो इज सेम. आप कुछ भी अज्यूम करो, द रेशो इज सेम, दैट विल नॉट चेंज. आप चाहो तो दोनों के पैसे को 64K ले लो. 64K. तो 64K अगर इनका स्टार्टिंग मनी था तो इनका मनी यहाँ पर 4K हो जाएगा और इनका मनी यहाँ पर K हो जाएगा. तो K कैंसिल होके फिर से 4 आ जाना है. ये रेशो का क्वेश्चन है. x इज इक्वल टू 100K. तो ना XAT में आप देखोगे, every paper will have 2 to maybe 3 questions of this kind. पढ़ो एक बार, ट्राई करो. There will be 2 to 3 questions of this kind.
देखो, हम हमेशा क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए लेके स्टार्ट करो। ये जैट वालों ने गेम पलट दिया यहाँ पे। रजनीश ने 25% डिस्काउंट पे सामान खरीदा, डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस, और उसे बेच दिया एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। तो डिस्काउंट जो खरीदना बेचना हो रहा है प्रिंटेड प्राइस पे हो रहा है। प्रिंटेड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड MRP। इसको 100 रुपए मान लिया। जब ये खुद खरीदने गए रजनीश, तो इनको 25 रुपए कम करके मिला, तो इनको कॉस्ट प्राइस 75 का पड़ा। और जब ये खुद बेचने के लिए गए, इन्होंने 10% का डिस्काउंट दिया MRP पे, तो इन्होंने सेलिंग प्राइस 90 रुपीज कोट किया। तो इनका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो प्रॉफिट है 15 रुपीज अपॉन 75, विच इज 1/5, विच इज 20% प्रॉफिट। तो जैट में 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलने ही हैं। एंड नाउ सी, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले जैट यूज्ड टू बी मच हायर लेवल एज कंपेयर टू कैट। जो भी आपने क्वेश्चंस बनाए ये सारे के सारे देखो आप 4 से 5 स्टेप में डुएबल है, 4 to 5 स्टेप्स। तो जैट इज हायर लेवल देन कैट, ये मन से निकालो। एटलीस्ट नॉट इन क्वांट, नॉट इन वर्बल। डिसीजन मेकिंग एक नया टॉपिक है, दैट माइट सीम डिफिकल्ट टू यू, अदरवाइज दैट इज नॉट अ हायर लेवल एग्जाम एज कंपेयर टू कैट नाउ एट दिस स्टेज। फंडामेंटल क्लियर है आपके, यू आर विलिंग टू वर्क विद दोस कैलकुलेशंस, आंसर्स आएंगे। ट्राई दिस, गिव इट अ शॉट। This is a very common kind of question seen in CAT as well. पिछले 4-5 साल से आ रहा था। इस साल मॉड्यूलस के क्वेश्चन कैट में भी नहीं आए हैं, बट जैट में आते रहते हैं। सो whenever you are dealing with power 1, there is only one variable. There is only one variable. The best way to solve to find maxima, minima or area is to plot the graph. You will see बड़े कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बनाते हैं लोग। कभी 2 मॉडुलस है तो ऐसा बनाते हैं, पहला एक मॉडुलस बनाते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं, फिर कहते हैं दोनों ऐड होगा तो ये सब फालतू बातें। ये 0 कहाँ पे होगा? -3 पे। ये 0 कहाँ पे होगा? 2 पे। ये 0 कहाँ पे होगा? 4 पे। You replace -3 in all of them. X is equal to -3 आप सब में रख दो। तो let us call it y. Y means height. तो पहला टर्म 0, यहाँ if you put -3 it becomes 5. You put -3 here, ये अंदर -3, तो जगह -6, -6, -8, -14। तो मॉड लग के 14 बनेगा, बाहर माइनस है तो -9। इस जगह पर
-9 वैल्यू है आपके ग्राफ की। मैं थोड़ा ग्राफ ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, आई एम रीड्रॉइंग एवरीथिंग। -3, 2 एंड 4, इनको रूट पॉइंट कहते हैं, रूट पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल मॉड। ये इंडिविजुअल जीरो कब होगा? -3 पे, ये जीरो कब होगा? 2 पे, ये जीरो कब होगा? 4 पे। पुट -3 इन ऑल ऑफ देम। अभी आपको पता पड़ गया था, व्हेन यू पुट x इक्वल टू -3 तो ग्राफ का वैल्यू आता है 9, -9। यू पुट 2 इन ऑल ऑफ देम, आप x इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो ये 0 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। पुट 2 हियर, तो ये बन जाएगा 4 -8 -4, तो बाहर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर वैल्यू 1 है। यू पुट 4 इन ऑल ऑफ देम, 4 पुट कर दो, तो दिस बिकम्स 0। यहाँ 4 पुट करेंगे 2, यहाँ 4 पुट करेंगे 7, 7 + 2 9। अब आपका जो ग्राफ है, इट इज कनेक्टेड थ्रू स्ट्रेट लाइंस। अभी एक्सट्रीम में क्या होगा ना, यू इमेजिन एक्सट्रीम में क्या होगा, ऑन द राइट साइड दे विल ओपन विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंज। x + 3 + x - 2 - 2x + 8, 2x x कैंसल्ड, ये हो गया आपका 1, तो 9। इस तरफ लाइन फिक्स्ड है 9, इस तरफ लाइन फिक्स होगी -9। तो आपको चाहिए था मॉड्यूलस इसका मैक्सिमा। देखो इस तरफ -9 है तो मॉड लगा के 9 बन जाएगा, इधर 9 है तो मॉड लगा के 9 बन जाएगा। कभी भी a की वैल्यू -9 और 9 के बाहर नहीं जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू लगाओगे मॉड में, तो इट इज 9। बिकॉज आई हैड टू टीच, इट टुक मी टाइम, अदरवाइज ये 2 सवा 2 मिनट का क्वेश्चन है। दिस इंटायर क्वेश्चन इज वर्थ 2.5 मिनट्स। व्हाट इज द अप्रोच? पहले आप इन वैल्यूज को एक एक करके रख के चेक कर लो, आपका मॉडुलस एडिशन कितना दे रहा है ये, तो उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। अब राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मॉड को ओपन करके देखना पड़ता है। राइट साइड में ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में ऑल ऑफ देम विल बी नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव ओपन होगा, -x + 3 -x - 2, और ये बन जाएगा +2x - 8, ये आपको माइनस देगा 9। जो भी राइट साइड में वैल्यू आ रही है, लेफ्ट में उसका नेगेटिव होता है। व्हाट आर द की कंडीशंस? सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल एंड पावर शुड बी 1। ये है, दिस मेथड विल वर्क यूनिवर्सली, ऑलवेज विल वर्क। मैक्सिमा निकालना, मिनिमा निकालना, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना, ग्राफ प्लॉट करना, you can do in this manner. Try. I can give you 3 different methods of solving this particular problem. Recently एक किसी कोचिंग के मॉक में a similar question was given with 4 coordinates, मतलब कि क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना था।
तो सबसे पहले तो आप एक ये यूनिवर्सल वाला मेथड सीखो, हाउ टू फाइंड एरिया इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये जो भी आपको गिवन है ना, आप इनको ना एक्स वाई वर्टिकली लिखो। दिस इज ए, दिस इज बी माइनस 2c वर्टिकली एक्स वाई, दिस इज ए, दिस इज बी प्लस 4c, दिस इज माइनस 2a 3c। जिससे आपने शुरू किया था वो आखिरी में आएगा। ये यूनिवर्सल है। आपको अगर एरिया चाहिए 1/2 लगेगा, डाउनवर्ड्स मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, अपवर्ड्स नेगेटिव। तो डाउनवर्ड हो जाएगा आपका ए बी प्लस 4ac, अब अपवर्ड नेगेटिव होगा तो माइनस ए बी प्लस 2ac, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, प्लस 3ac, अपवर्ड इज नेगेटिव। मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करना है। बेसिकली आपका बन जाएगा 4ab, ये प्लस बन जाएगा, प्लस 8ac, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, एज इट इज मल्टीप्लाई करना आपको, तो माइनस 2ab प्लस 2ac, एंड अपवर्ड इज नेगेटिव, माइनस 3ac। बाहर लग जाएगा 1/2। ये आपका आंसर आ चुका है। जो जो कैंसिल कर सकते हो कर दो, योर आंसर इज रेडी। तो ये ए बी प्लस ए बी कैंसिल, ये 4ac 2ac 3ac, तो ये बन गया आपका 9ac। ए बी देखो, इज ए बी बीइंग कैंसिल्ड हियर, ये माइनस 2ab आएगा ना, 2 4, ये थर्ड वाला है, तो ये 2ab आएगा, दिस विल बी 2ab। तो ये और ये कैंसिल हो गया आपका 9, ये आपका हो गया 8 17, 17 माइनस 1, प्लस माइनस एक बार चेक कर लो आप, एक आधा प्लस माइनस 1 चेक कर लो। I think you'll have 18ac, 18ac by 2 is 9ac। ये सबसे आसान तरीका आंसर लाने का। दूसरा, यू कुड अज्यूम नंबर्स, यू कुड हैव टेकन, क्योंकि आंसर में अगर आप a को 1 ले लेते हो, b को 2 और c को 3, दिस बिकम्स 1 into 2 into 3 36, 1 into 2 into 3 54, दिस बिकम्स 2 into 3 6 into 6 36, केवल ये पहले वाले के बराबर है, रेस्ट आर डिफरेंट, दिस बिकम्स 27। तो आप यहाँ पर 1 2 3 पुट करके कोऑर्डिनेट निकाल के सॉल्व कर दो। दूसरे तरीके, दूसरे ऑब्जर्वेशंस आप देखो, फ्रॉम हियर टू हियर द x कोऑर्डिनेट डिड नॉट चेंज, केवल y का वैल्यू बदला। इट्स अ वर्टिकल लाइन, x का वैल्यू a है, y का वैल्यू b माइनस 2c से b प्लस 2c। अब ये क्या चीज है, दिस इज द थर्ड साइड, दिस इज माइनस 2a प्लस 3c। So if I imagine ये यहाँ कहीं पर है माइनस 2a comma 3c, तो your triangle somewhat like this, this is the vertical line, that is the base, and this is the height. So what is the gap from a to minus 2a? The gap is 3a. What is the shift? What is the shift from minus 2c to 4c? The shift is 6c. So half of base into height is also the area. This is more logical in this particular example because it's a vertical line. Horizontal point is a, that is x. In first 2 points, you see x does not change, y is increasing, so it's a vertical line. So the distance between minus 2a to a is 3a, that is the height of the triangle, and this is the base. Minus 2c to 4c is 6c, so height into base, half is equal to area, 9ac. So this is universal. I wanted you to learn this, observe this. सेकेंड मेथड, आप ABC को 1 2 3 रख के कैलकुलेट कर लो और आंसर निकाल लो इन द सेम मैनर। एंड द थर्ड मेथड, बीइंग एबल टू प्लॉट इट। प्लॉट करना हर बार काम नहीं आता, हैड इट बीन अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रायंगल तो प्लॉट करके हेल्प मिलनी नहीं है, बट इस केस में हेल्प मिल रही है। ट्राई दिस।
ये प्रोबेबली आपसे एक बार में नहीं बनेगा if you have not solved such questions. X and Y are two positive integers and P is a prime number. If this is true, 7P, which is the minimum value of X minus Y? X minus Y की कम से कम value क्या है? So in such questions, because मेरे को X और Y साथ में चाहिए, I would like to bring X and Y together. मैं पहले expand कर रहा हूँ इसको. X square minus XP, नेगेटिव आएगा बाद में. X square minus XP minus Y square minus YP is equal to 7P. You see X and Y जब साथ में आएगा X square minus Y square, तो एक X plus Y बन जाएगा और एक X minus Y बन जाएगा. Here if I see minus P, if I take common, तो अंदर X plus Y बन जाएगा. If I further take it common, X plus Y, X minus Y minus P is equal to 7P. अब क्या कहा आपने? P is a prime number. ये prime number है. Prime number can be 2, 3, 5, 7, 9. So ऐसा आपको हम algebra में करवाते हैं. Whenever you come across multiplication in this manner, there are two possibilities. X plus Y is equal to 7. X minus Y minus P is equal to P. इनको solve करने की कोशिश करो. Or it might happen that X plus Y is equal to 7P. X minus Y minus P is equal to 1. मैं क्या कर रहा हूँ? X minus Y मुझे चाहिए. ये मुझे X minus Y चाहिए. If this is equal to P, X minus Y is equal to 2P. X minus Y is equal to 2P. इनमें से कोई भी नंबर twice of prime तो नहीं है. कोई भी नंबर twice of prime तो नहीं है. और if X minus Y minus P is equal to 1, that means X minus Y is equal to prime plus 1. इनमें से कोई भी नंबर prime plus 1 तो नहीं है. So out of these, none of the conditions fulfill the requirement. आप ऐसा भी सोच सकते हो. Let us say it is if this was X minus Y minus P is equal to 7. X minus Y minus P is equal to 7. So X minus Y should be 7 plus P. 7 से ऊपर तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. अगर आपने इसको इंटरचेंज कर दिया होता तो X plus Y cannot be equal to 1. तो मैं इंटरचेंज यहां पर नहीं कर सकता. Here I could still interchange. X minus Y is equal to 2P. कोई भी नंबर डबल तो है ही नहीं यहाँ पे. Not possible. None of the above. Second case, अगर ये 7 के बराबर है तो ऊपर P है. X minus Y is equal to 7 plus P. ऐसा भी कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास. Here it is X minus Y is equal to P plus 1. X minus Y is equal to P plus 1. P is a prime number. None of the above is possible. अच्छा, you're going with 3 is equal to P plus 1, that is 2. You're going with X minus Y is equal to 2. ये वाला केस है आपने. You've taken this case. You've taken this case. तो एक बार चेक कर लो. ये जो आपने भी एक वैल्यू चेक कर ली. X minus Y is equal to X minus Y is equal to P plus 1, which is 3. तो आपने P को ले लिया 2. X plus Y will become 14. दो नंबरों का एडिशन इवन और उनका डिफरेंस ऑड नहीं हो सकता. If you take 3 is equal to 2 plus 1, 2 is a prime. Very good. तो अब देखो P is equal to 2 में कितना बन गया? 14 बन गया. This is 14. ये 14 है. तो दो नंबरों का एडिशन इज इक्वल टू इवन और उनका डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड नहीं हो सकता. दे विल टर्न इनटू डेसिमल्स. ये डेसिमल बन जाएगा आपका. None of these. Yeah. Try this.
So you notice that is relying on very standard concepts from CAT. कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ो, देयर इज अ सिलेंडर और कोई चीटी को ऐसा ट्रेवल करके जाना है, या देयर इज अ क्यूबॉइड, कोई चीटी को ऐसा ट्रेवल करके जाना है, दिस कॉल्ड थ्रेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेडिंग. It's a very standard concept, formula based concept. A non-flying ant wants to travel from one bottom corner to diagonally opposite corner of a cubicle room. The room side is 2 meters. Find the minimum distance it needs to travel. तो minimum distance के लिए आप ऐसे curvature में चलोगे. देखो, when an ant which cannot fly has to go from here to opposite point here, the ant will try to walk on the walls. So the ant is traveling on two wall surfaces. The sides are 2 unit by 2 unit. This front and this right side wall I've opened for you. So it is always a diagonal. It is always a diagonal. ये standard CAT का concept formula है. We are directly using for that. So horizontal distance 4 units, vertical distance 2. 4 square plus 2 square root over. ये चलना पड़ेगा उन्हें. दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर आ जाएगा. 2 square 4 plus 1 5. ये आपका आंसर. If it was a cylinder और आप पूरा घूम के ऊपर तक आते, तो what you need to do is cylinder में, in a cylinder it's a rectangular piece of paper 2 pi r plus h. तो आप ऐसा ट्रैवल करोगे. तो जो ये एक थ्रेड हो, is called one thread. This one thread, the length of one thread is equal to root over 2 pi r whole square plus h square. This is called the concept of threading. एक thread put कर रहे हो बाहर से, जैसे आप screw पे देखते हो, there's a thread created. वैसा. It is always the diagonal connecting the opposite point. That's all. ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इन द टेलीग्राम ग्रुप, जो कॉमन वाला है. जो एनरोल्ड है उनके तो अलग से ग्रुप में चली जाएगी. डन फॉर टुनाइट. आपको वैसे क्वेश्चंस मिलते हैं कुछ एडवांस, तो शेयर करो ग्रुप में. आई गिव देम अ शॉट फॉर यू. ये और 8-10 क्वेश्चंस और हैं यहाँ पे. विल पिक देम अप इन द नेक्स्ट सेशन.